Hello, everyone. A very warm welcome to all of you on the platform of an academy. Let me quickly have a look who all have joined in the session. Let's get started quickly. In this session, students, we are going to read the play. Okay, and I'll tell you why reading a play is different from watching a play, and how a play is meant to be watched and enjoyed as an audience, instead of just reading it. Okay, we'll take a look at this play, we'll read it out, we'll try to understand what this is all about. But before that, I would quickly like to see who all are there in the class. Okay. Hello, hello, hello. Hi, who all are there? So, hi, Tushar. Hello. Hello, everyone. Hi, Darshan. Hi, Navjot. Hi, Harsheen. Hello. How is everyone doing? How are you all? All good, all fine. Are you all excited to read this particular chapter with me, with this play with me? Yeah. So, who's going to tell me what is the difference between play, prose, and poem? Who's going to tell me the very basic difference between play, prose, and poem on the very onset of it? Let's get started with this first. Hi Navjot, hello. No worries, that's okay. You can enjoy this play. This is kind of a play. This is one play that is considered to be one of the greatest plays of all time, and probably, I mean, not really, but I have to say that it's one of those plays which have played or which can actually play a role in making you understand how to handle a critical situation. Okay, so for instance, something happens to you and you are trapped. Okay, there's a situation wherein you don't know what to do. कहते हैं ना, आगे कुआं पीछे खाई, you have nowhere to go, and how to escape, how to elude from that particular situation. That this play talks about that. But before I get into the details of it, I would quickly like to know whether you have read this or not. Hi Shreya, hi Nisha, hello, hello Nishka, hello Nishka, hi Darshan, I'm taking your name. Okay, let's get started, everyone. And for those learners who are here on the platform for the first time, let me introduce myself. My name is Ramana. I'm your English educator. I've completed my master's from Delhi University. I've been tutoring for a while now. This is my code that you all can use in order to take the plus or iconic subscription, whichever you want to. And students, you can also avail 10% discount with this code. Okay, so this code also gives you 10% discount. So don't forget to use this when you're taking the plus subscription. And when you take the plus subscription, students, you also get to learn from the comfort of your home. You all know that. And apart from that, you can access multiple courses that are there on An Academy platform. So with one subscription plan, you can access all the courses that are there. Definitely, all your top educators are here, regular doubt clearing sessions, exhaustive coverage of the syllabus, mentorship, doubt clearance sessions, guidance, study material, ये सब आपको मिलता है अन अकेडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे. इसमें बैच कोर्सेज भी होते हैं, लाइव टेस्ट भी होते हैं, क्विजेस भी होते हैं. इसकी प्राइसिंग आप देख सकते हो. दिस स्टार्ट्स फ्रॉम 3 months. एंड आपको इनमें से जो भी सुटेबल प्लान लगे, यू कैन गो फॉर इट. इट स्टार्ट्स फ्रॉम 3, देन गोज टू 6, 9, 12, 15, 18, 24, 36, 48, whichever suits you, you go and grab that one. Now let me tell you, students, that the moment you add the code, that is the educator code, yes, you all know that. This is Romana 10, this is my code. When you add that, you get a discount of 10%. So this pricing, which is 833 per month, which will come down to 750 a month. Yeah. Darshan, that's a beautiful thing to hear. Thank you. All right, and this will become this will come down to this, so 1042 will come down to 938, so on and so forth. ठीक है, इसी तरह से अभी एक अमेजिंग अमेजिंग ऑफर चल रहा है आप लोगों के लिए, जो आज ही तक है. 25th, 26 और 27, ये 3 दिनों का आपके पास ऑफर है, ऑफर था, जो आपने 2 दिन तो मिस कर दिया. अब एक ही दिन बचा है, जिसमें अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, if you're planning to take the plus subscription, and if you plan to take the subscription for 1 year or above, and if you take the subscription between 3 days, these 3 days, you get 6 months free extension. तो आपको
6 months का एक्सटेंशन जो कि अभी सिर्फ 3 मंथ्स के लिए है, वो आपको 6 मंथ्स का मिल जाएगा सिर्फ इन 3 दिनों में। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं जरूर ले लें और अभी ले लें, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लें। ये कोड है, इसको यूज करेंगे तो 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। ऑल राइट एवरीवन, इज दैट क्लियर? Are you all excited to get started with the chapter? How many of you have read the chapter? Tell me that. How many of you have already read the chapter? Yeah. So this is the Telegram, group students. You all can connect here and stay updated about homework and notes. Bugs Bounty एक फीचर है जिसके थ्रू आप कोई भी इनएप्रोप्रिएट कंटेंट रिपोर्ट कर सकते हैं। और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आपके प्लस सब्सक्रिप्शन से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। व्हाट इज द डिफरेंस? वेल, हियर यू गेट अ पर्सनल मेंटर who connect with you on a one-on-one basis, and you have a special treatment, as in you get a live doubt clearing session. We connect with your parents, update them about your performance, how you're performing and how you have been performing over the period of time. We also help them or you getting your report card, your weekly report, whether you have improved or not, whether you have declined, आपका performance कैसा चल रहा है, all of that. और of course plus का subscription के जो फीचर्स हैं जैसे कि घर से पढ़ना, टीचर्स हैं आपके, वो सब तो कांस्टेंट रहेगा ही। इसके भी प्राइसिंग आप देख सकते हो, 3 मंथ से 48 मंथ्स तक के सब्सक्रिप्शन प्लान्स अवेलेबल हैं। whichever suits you, whichever you find convenient, go for it. And this pricing 1729 will come down to 1556, 1833 will come down to 1650, so on and so forth. आप देख सकते हो और कोड लगा लेंगे रोमाना 10 तो 10% डिस्काउंट भी मिल जाता है। Are you all ready? Everyone excited? Okay. Students, I will be inviting you all to the special class after this. Okay, so after this, oh, sorry, this is not written by Anton Chekhov. I'm so sorry. Who can tell me who is the writer of this story? Yeah, it is Douglas, right? It's Douglas James. Okay, it's not Anton Chekhov. I'm so sorry. I think it is a mistake over here. So it is Douglas James. Okay, he is the writer, and he's a playwright actually. Who is a playwright and how is a playwright different from an author? How is a playwright different from a poet? Can you tell me, students? Anyone here in the class? Hi, Anuj. Students, let me tell you that there will be a mentee also after the session, and once I complete this, and then we'll also go to special classes after the session at 5:30 to continue the chapter and then have some important questions. Okay, so this is how we're going to go about in that class. So yes, hello. Now let's come to the chapter here. Let's get started. And so first of all, let me quickly tell you who is a playwright. So playwright is slightly different from a poet, from an author. How? Well, a playwright is someone who writes plays. As simple as that. Now, what is a play? The purpose of a play is to be performed. ठीक है, जब आप प्ले लिखते हो तो प्ले का जो स्क्रिप्ट होता है वो ऐसे लिखा जाता है जिसमें डायलॉग्स होते हैं। दे डू नॉट हैव अ स्टोरी लाइन, उनकी स्टोरी लाइन नहीं होती है, उनके डायलॉग्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ कॉन्वर्सेशन। क्या होते हैं? डायलॉग्स इन द फॉर्म ऑफ कॉन्वर्सेशन। तो कॉन्वर्सेशन के फॉर्मेट में लिखा होता है और ऐसा लगता है कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, कहानी चल रही है और आप एक स्पेक्टेटर हो। आप क्या हो? स्पेक्टेटर हो, जो देख रहे हो, व्यू कर रहे हो, ऑडियंस हो। आप रीडर नहीं हो। जब आप पोम पढ़ते हो तो आप रिसाइट करते हो, जब आप स्टोरी पढ़ते हो आप रीड करते हो, और आप जब आप प्ले पढ़ते हो तो यू एक्चुअली बिकम एन ऑडियंस एंड यू इमेजिन व्हाट्स हैपनिंग, बिकॉज प्लेज आर रिटन टू बी परफॉर्म्ड। इज दैट क्लियर? उसी तरह से हम इस पूरी स्टोरी को समझने की कोशिश करेंगे। ये पूरी स्टोरी अगर मैं बोलूं भी तो आप समझना कि मैं प्ले को रेफर कर रही हूँ, जिससे हम कोशिश करेंगे कि कहानी के तौर पे हम इसे समझने की कोशिश करें। Another point of discord, or what to say, a discussion, is the pronunciation of Gerard. Okay, it is Gerard. Okay, you can say it Gerard, Jared, but not Gerard. It's J definitely. We pronounce G as J, so it's Gerard. Now, lives alone in a lonely cottage. Let's get started, everyone, and let's try to analyze what is the scenario. So Gerard, we are introduced. We get an introduction of this character Gerard,
who is living in a lonely cottage. So lonely means it's at a place which is in a seclusion, which is not in a very crowded place. So it's a lonely cottage. किसी कोने में. An intruder. Who is an intruder? Yeah, somebody who is a trespasser, who is not allowed to enter your house without permission, but he enters your house without permission, is an intruder. And in this case, it was a burglar, but not burglar. Burglar, he didn't come to rob him, but he came to kill him, which we will get to know later. So he was an intruder who is a criminal. Now, who is a criminal? You all know a criminal is somebody who has committed some sort of crime. And what is crime? Crime could be murder, theft, robbery, all of these. Anything illegal. Enters his cottage. Okay? And then he enters his cottage. He intends to murder him and take on his identity. So what is his intention? What is his intention right here? Tell me. What is his intention? Why has he entered? So on the very go we are introduced. We know what is his intent. He wants to kill Jared. And what will he obtain from it? What will he get by killing Jared? Yeah? What does he want? Come on, students. You can't sit like, idols in my class. No, you have to talk. You have to talk in my class. And you all know that. Yes? His intention is to kill him and take his identity because he is himself a criminal, maybe a robber. He has committed a few crimes, murder. Yes. So he wants to lead a life in solitude, or rather in this lonely cottage. And his build, his physique is very much like that of Jared. Okay, that is why he wants to kill him and take on his identity and live in his house. Does he succeed? How many of you say yes? How many of you say no? Does he succeed? Let's see. Let's find out. Okay. Now let's also quickly talk about the title, which I missed to tell you. What is this title about? If I were you. अब देखो यहाँ पे ग्रामर का भी क्वेश्चन है. मैम आई तो सिंगुलर होता है, यहाँ पे वर क्यों बोला गया? तो हमें पता है ग्रामेटिकली जब हम किसी सिचुएशन को हाइपोथेटिकल कंसिडर करते हैं जो कि रियलिटी नहीं है, जो कि हो सकता है, ऐसा होता. इफ यू वर अ मिलियनियर, तो तुम क्या करते? इफ यू वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री फॉर अ डे, व्हाट वुड यू डू? लाइक दैट. तो ऐसे हाइपोथेटिकल सिचुएशंस जब हमारे सामने प्रेजेंट किए जाते हैं तो हम वहां पे वॉज से वर हो जाते हैं. वैसे हम अगर बात करें तो मैं क्या बोलूंगी? आई वॉज नॉट हैप्पी दैट डे. I was very happy that day. लेकिन मैं अगर आपको हाइपोथेटिकल सिचुएशन में बताऊंगी तो आई के साथ वर यूज करेंगे. ठीक है एवरीवन? Solitude is a state of happiness when you're alone and you're happy. That is solitude. चलिए स्टार्ट करते हैं रीड करना. जो जहां तक हम आज कंप्लीट कर पाएंगे हम करेंगे और इसके बाद we'll move to हमारे प्लेटफॉर्म पे अनअकैडमी के और वहां पे जाकर हम इसे कंप्लीट करेंगे. A small cottage interior. अभी हमें सीन बताया जा रहा है तो आप क्या समझ रहे हैं? There is a stage on which the performance is going on. अभी परफॉर्मेंस चल रही है और सीन किस चीज का? सीन क्या होता है? बैकग्राउंड जो आपके सामने अपीयरेंस है वो क्या है? एक छोटा सा कॉटेज है. कॉटेज क्या होता है? जैसे मैंने बताया एक छोटा सा घर जो यूजुअली कंट्री साइड विलेजेस में होता है. तो छोटा सा घर है. स्मॉल कॉटेज इंटीरियर. इंटीरियर नॉट कॉटेज, बाहर से नहीं दिख रहा है, ये इंटीरियर है इसका. ये समझ रहे हो आप? दिस इज इंटीरियर इनसाइड. ओके. देयर इज एन एंट्रेंस बैक राइट विच मे बी कर्टेन्ड. ओके. और एक एंट्रेंस है जो कि कर्टेन्ड है, पर्दे लगे हुए. अनदर डोर टू द लेफ्ट मस्ट बी अ practical door. Practical door means this must be the door that they must be using in order to come and go. So practical, so for practicality to use it. The furniture is simple. Okay, it's not very lavish, not exquisite. It's simple. Consisting of a small table towards the left. So on the left side there is a small table. A chair or two. एक दो chairs हैं. एक दीवान है. दीवान क्या होता है? What is a दीवान? A small bed. Okay, a small single bed.
which has a bed box in it, right? It's covered. So it's usually kept in a drawing room, or maybe for one person who's sleeping in on a divan. Rather upstage on the right. What is upstage? Anyone here? Solitude का मतलब होता है शुभाग्या that अकेलापन, लेकिन in a good way. Like if you are alone and you are happy, then you are in solitude. Upstage का मतलब होता है towards the back of the theater. That is the upstage. Okay, back side of the theater. और एक टेलीफोन है वहां पे. तो ये चीजें हैं जो वहां पे मौजूद है. When the curtain raises, अब धीरे धीरे पर्दा उठ रहा है, और क्या हम किसे देखते हैं? हम जेरार्ड को देखते हैं standing by the table making a phone call. और वो टेबल के पास खड़े होकर किसी से बात कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, कॉल लगाने की कोशिश कर रहे हैं. Is of medium height. अब इनका फिजिकल अपीयरेंस, स्टैचर कैसा है? लेट्स टेक अ लुक. ही इज मीडियम हाइट. बहुत लंबे नहीं है, टॉल नहीं है, शॉर्ट नहीं है, मीडियम हाइट के हैं. वेयरिंग अ हॉर्न रिम्ड ग्लासेस. उन्होंने ग्लासेस पहनी है, और रिम कैसा है? हॉर्न रिम्ड ग्लासेस है. ही इज ड्रेस्ड इन अ लॉन्ग लाउंज सूट. सो इस लाउंज में हम कैसे कपड़े पहनते हैं, उस तरह के कपड़े इन्होंने पहन रखे हैं. एंड अ ग्रेट कोट. और एक कोट पहन रखी है उसके ऊपर से. His voice is cultured. What is a cultured voice? A sophisticated voice that shows that you are cultured. ऐसा नहीं कि क्या कर रहे हो, so you have to talk in a polite and very nice, decent manner, like that. So that is cultured. Gerard, well, tell him to phone up directly. I must know. Yes, I expect I'll be still here, but you must not count on that. In about 10 minutes' time. Right ho, goodbye. She's talking to someone, and these three dots suggest that someone spoke something on the other side, of the line. He's speaking to someone else, and then he responds to him and says, well, tell him to phone up directly. उससे कह दो कि वो मुझे directly call कर ले. I must know. हाँ ठीक है ठीक है. Yes, I expect I'll still be here. अच्छा, मुझे लगता है मैं अभी यहीं रहूंगा कुछ देर. But you mustn't count on that. Count on मतलब you can't consider that. Count on me. You can count on me. Like you can trust on me. You can consider me. In about 10 minutes time. हाँ बस 10 मिनट में पहुंच जाऊँ. So is probably leaving for some place. और कह रहे कि अभी तो मैं यहीं हूँ, लेकिन मैं 10 मिनट में पहुंचने वाला हूँ. चलो गुड बाय. फोन रख दिया उन्होंने, डिस्कनेक्ट कर दिया. He puts down the phone and goes to the divan on the left, where there is a traveling bag, and starts packing. और वहाँ पे traveling bag है. This suggests that he's traveling to some place. Okay, he's going somewhere. Students, are you all understanding this? Is it getting boring? No, you all are enjoying this. Yeah, everyone, come on. You have to respond in the class. Okay. All right. So, whilst he's thus engaged, another man similar in build to Gerard enters from the right silently. और जब ये बात कर ही रहे हैं, तो एक इंसान बिल्कुल उनके स्टैचर का कहां से इंटर करता है? उस वहीं पे राइट हैंड साइड से इंटर करता है. रिवॉल्वर इन हैंड. उनके हाथ में क्या है? रिवॉल्वर है. ही इज फ्लैशिली ड्रेस्ड इन एन ओवरकोट एंड अ सॉफ्ट हैट. एक सॉफ्ट हैट पहन रखी है उन्होंने, और एक ओवरकोट रखा है. फैशनली ड्रेस्ड है. फैशनली यानी कि काफी एक्सूबरेंट. ओके, लुकिंग वेरी फ्लैशी, ब्राइट. He bumps accidentally against the table, and at the sound, Gerard turns quickly. तो बम्प करना यानी कि एक्सीडेंटली आप किसी चीज के ऊपर स्टेप ऑन समथिंग एंड यू स्टार्ट टू फॉल, बट यू मे प्रोबेबली नॉट फॉल. तो वो किसी चीज के ऊपर उनका पैर पड़ जाता है, और एक आवाज आती है जिसकी वजह से जेरार्ड मुड़कर देखते हैं. और जैसे ही वो मुड़कर देखते हैं, तो इस इंसान को वो पाते हैं अपने सामने. जेरार्ड प्लेजेंटली, बहुत आराम से पूछते हैं, व्हाई दिस इज अ सरप्राइज मिस्टर. वो कहते हैं क्या ये कोई सरप्राइज है? आप कौन है? Intruder. So this is an intruder. Why? Because he has entered his house without information. He's entered his house without asking him. So he's an intruder, definitely. Okay.
Just a second. Students, you can do this bit quickly. Share the session with your friends quickly and ask them to join in. सारे 9th class के बच्चे. Intruder, I'm glad you are pleased to see me. I don't think you will be pleased for long. Put those paws up. मतलब paws up is your हाथ ऊपर करो. Revolver है तो हाथ ऊपर करो. So what is he saying? कि I'm glad you are pleased to see me. वो जब कहते हैं वो जो सरप्राइजिंगली कह रहे हैं कि दिस इज अ सरप्राइज, आप कौन हैं, तो वो होस्ट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, बिल्कुल एक होस्ट बन गए यहाँ पे. ठीक है. और ओके सो और ये उन्हें अपने गेस्ट की तरह ट्रीट कर रहे हैं और कह रहे हैं आई एम ग्लैड यू आर प्लीज, मैं खुश हूं कि आप मुझे देखकर बड़ा खुश हुए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप ज्यादा देर तक खुश रह पाएंगे. पुट दोज पॉज अप, चलो अपने हाथ ऊपर कर लो. This is all very melodramatic. Now, what is melodramatic? Who's going to answer this? What is the melodrama? You are a melodrama queen. You are such a melodrama queen. What is melodrama? If something is melodramatic, it's very dramatic. Okay, you put in a lot of effect in it. Like over exaggeration. Not very original, perhaps. But trying to be calm. Nonchalant is your word, I think. तो वो कहते हैं कि नॉन चैलेंज यानी कि रिलैक्स्ड. ठीक है, वो नहीं रिलैक्स करना चाह रहे हैं, ट्राइंग टू बी काम. तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं ये, और जेरार्ड जिस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, जेरार्ड का सबसे पहला रिएक्शन क्या है बच्चों? हैज ही पैनिक्ड इन द सिचुएशन? या वो हाउ इज हिज रिएक्शन? अगर आपसे पूछा जाए व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ जेरार्ड व्हेन ही सॉ दिस इंट्रूडर इंटर, हम यूजुअली कैसे रिएक्ट करते हैं? ओ माय गॉड, कौन है, अरे भागो चोर, right? We start shouting, but he's not reacting at all. He's taking it on very right stride. Okay, so he's not reacting. तो वो कह रहे हैं कि तुम बहुत ही काम कंपोज बनने की कोशिश कर रहे हो. तो वो कहते हैं आपका मतलब है नॉन चैलेंज, राइट? So he's using these heavy words. Thanks a lot. You'll soon stop being smart. I'll make you crawl. Crawl करना, हल्के हल्के चलना. But he says कि तुम ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, अभी तुम अपने you will start crawling, अभी तुम रेंगने लगोगे, you will be on the floor. I want to know a few things. See, intruder कहते हैं कि मैं कुछ जानना चाहता हूं तुमसे. क्या जानना चाहते हैं ये? Jared, anything you like. I know all the answers. But before we begin, I should like to change my position. You may be comfortable, but I am not. तो ये क्या कहते हैं जेरड? दैट आप जो भी पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं. आई नो ऑल द आंसर्स, मेरे पास दुनिया के सारे आंसर्स हैं. बट बिफोर वी बिगिन आई शुड लाइक टू चेंज माई पोजिशन. नाउ व्हाई इज ही सेइंग दैट ही वुड लाइक टू चेंज हिज पोजिशन स्टूडेंट्स? बिकॉज जब वो उनके सामने से आ गए हैं, दिस वॉज एन अनएक्सपेक्टेड सीन, राइट? ही वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस. सो वेन ही came there with that gun right in front of him, he must be in a very discomfortable position ऐसे. Okay, so now he wants him, he is saying that I want to change my position because मैं comfortable नहीं हूँ. आप तो आराम से ऐसे रिवॉल्वर लेके खड़े हो, पर मैं नहीं हूँ. Sit down here and no funny business. Motions to a chair and seats himself on the divan by the back. Now then we'll have a nice talk about yourself. चलो तुम्हारे बारे में कुछ बात करते हैं. Now why does he want to talk about him? We'll wrap the story short here. Okay, that he wants to have a nice talk with him because he wants to know more about him. At last, a sympathetic audience. I'll tell you a story of my life. How as a child I was stolen by the gypsies, and why at the age of 32 I find myself in my lonely Essex cottage. How? Now, you can see a lot of drama here. So the behavior here, Jared, this is a very important question, students, if you want to note that how can we say, how do we know what is the profession or what was the profession of Jared? Who can tell me what was the profession of Gerard? What was his profession? Students, come on, answer. You have to subscribe to the channel if you want to answer and talk. So quickly tell me, what was his profession? His profession was, he was a dramatist, right? Okay. At last, a sympathetic audience, and he's quite
excited. He's quite excited to share his experience because now he says कि finally मुझे एक ऐसा audience मिला है जो खुद से मेरी बात सुनना चाहता है. He's quite excited. I'm sorry, I thought you were telling me, not asking me. Keep it to yourself and just answer my question. You live here alone? Well, do you? I'm sorry, मुझे लगा कि आप मुझे आप बता रहे हैं. मुझे ये नहीं पता था कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मैं अकेला रहता हूँ यहाँ पे. Your voice is unfamiliar. A question of inflection. Okay? Jiraj कहते हैं, I'm sorry, I thought you were telling me. A question of inflection. Your voice is unfamiliar. मुझे समझ नहीं आया. With emphasis. और वो इस बार थोड़ा जोर से emphatically बोलते हैं. Do you live here alone? And if I don't answer? And you can notice, students, that how he's evading this question. He simply doesn't want to answer. He doesn't want to answer this question. और हम बहुत ध्यान से देखेंगे कि ये कैसे उनके क्वेश्चन को इवेड कर देते हैं, बच जाते हैं उनके क्वेश्चन से. कहीं पे भी इन्होंने काफी बार पूछा, लेकिन ये एक बार भी उनके सवाल का जवाब नहीं देते हैं डायरेक्टली. एंड वी शुड नोटिस दैट. डू यू लिव हियर अलोन? एंड इफ आई डोंट आंसर, अगर मैं जवाब ना दूं तो आप क्या करेंगे? यू हैव गॉट इनफ सेंस नॉट टू वांट टू गेट हर्ट. तुम्हारे पास इतना दिमाग तो है कि तुम हर्ट नहीं होना चाहोगे. कौन कह रहा है ये? इंट्रूडर. जेरड. I think good sense is shown more in ability to avoid pain than in the mere desire to do so. Okay, you can see how he's just evading the question and he's saying something else. He's asking one thing, but his answer is very different from what the question is. तो वो कह रही कि नहीं नहीं, ऑब्वियस सी बात है, अकलमंदी तो इसी बात में है कि पेन को अवॉइड किया जाए. एक पेन अपने ऊपर इन्फ्लिक्ट करना ये कोई अच्छी बात तो है नहीं. What do you think, Mr. Okay, तो वो उसका किसी तरह से उनका नाम पता करना चाह रहे हैं. Okay, so probably he wants some link. He's just trying to get some information about this intruder. Never mind my name. I like yours better. मेरे नाम से कोई लेना देना मत रखो, मुझे तुम्हारा नाम पसंद है, मिस्टर जेराड. What are your Christian names? So Christian name is a formal name. Okay, you know, जिससे आपका सारा डॉक्यूमेंटेशन होता है. जेरेड, वो कहते हैं विंसेंट चार्ल्स. Do you run a car? Jared. No. Intruder. That's a lie. You are not dealing with a fool. I'm as smart as you and smarter. And I know you run a car. Better be careful, wise guy. Now, this point is very, very, very important, students. I'll tell you why. Because this tells us something more about the intruder. What is that? So, first of all, he asks, do you run a car? Okay, so he's simply checking on him. He's trying to check whether he gives the right answer or not. He says, no, I don't. So Gerard is probably telling everything false. In fact, मुझे लगता है कि उनका जो नाम है वो भी उन्होंने शायद रॉन्ग ही बताया होगा. और यहाँ पे कह रहे हैं कि नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम जरूर कार ड्राइव करते हो, जरूर कार चलाते हो. You are not dealing with a fool. And now he is boasting. He is self-boasting. He is saying कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक बेवकूफ इंसान के साथ डील कर रहे हो? मैं तुम्हारी जितना ही स्मार्ट हूँ, इनफैक्ट तुमसे ज्यादा स्मार्ट हूँ. मुझे पता है तुम एक कार रन करते हो. बेटर बी वे केयरफुल, वाइज गाय. तो तुम जो इतने अक्लमंद बन रहे हो, थोड़ा सा और केयरफुली बात करो, वाइज गाय. नाउ स्टूडेंट्स, आई विल टेल यू, this word is usually used as a very slang language or in a very casual manner. Guy refers to you person, you folk. Okay, so all of these words, folk, guy, these are not used on an everyday basis. अगर आप ब्रिटिश इंग्लिश देखेंगे तो ये वर्ड्स आपको शायद ना मिले. ये कैजुअल वर्ड्स होते हैं जो ज्यादातर अमेरिकन इंग्लिश में बोले जाते हैं. ठीक है, so this is more of American English. Remember that. Are you American or is that merely a clever imitation? तो जब इन्होंने इस तरह से बात करी तो जेराड फिर से कोशिश करते हैं कि वो कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन उनसे डिराइव कर लें. क्या तुम अमेरिकन हो या सिर्फ उसकी नकल कर रहे हो? इंट्रूडर. लिसन. हाय संदीप, come on, come on, come on, come on, join in quickly, fast. Listen, this guy is no toy. I can hurt you. This gun's no toy. I can hurt you without killing you and still get my answers. And he's saying कि अभी इस गन को ना टॉय मत सोचो, ये मत सोचो कि ये चल नहीं सकती है.
अभी मैं इस गन के थ्रू तुमसे सारे आंसर्स डिराइव कर लूंगा. Of course, if you put it like that, I'll be glad to assist you. I do possess a car and it's in the garage around the corner. और वो सच सच बता देते हैं गन के नाम से. जिराट थोड़ा सा यहाँ पे अपने आप को बैक सीट पे आकर सब कुछ बता देते हैं फाइनली. इंट्रूडर, दैट्स बेटर. अब तुम ठीक बिहेव कर रहे हो. डू पीपल ऑफन कम आउट हियर? क्या लोग यहाँ आते रहते हैं? जेरेट, वेरी रेयरली. Surprisingly, few people take the trouble to visit me. Now this is again the use of determiner. Students आप देख सकते हो ना, जिन्हें भी डाउट होता है कि मैम few और a few के बीच में क्या डिफरेंस है, तो देखिए few is barely anyone. Okay, barely anyone. Few people take the trouble to visit me. बहुत कम लोग हैं जो इतनी परेशानी उठाकर मुझसे मिलने आते हैं. Because we also got to know that this cottage is located in a very barren place or in a lonely place. There's the baker and the greengrocer. तो कौन कौन आते हैं इनके पास? Take a list of it. Baker, greengrocer. So यानी कि baker is somebody who provides you breads, gives you breads and bakery products. Greengrocer कौन है? Greengrocer is somebody who brings vegetables for you, of course. And then there's the milkman. यानी कि जो everyday basic necessity होती है उनकी चीजें provide करने वाले जो हैं greengrocer, baker and then the milkman. Only these people visit. Quite charming, but no one so interesting as yourself. लेकिन ऐसे लोग तो आते हैं, लेकिन आपके जैसा इंटरेस्टिंग इंसान कोई नहीं आया कभी. इंट्रूडर, आई हैपन टू नो दैट यू नेवर सी ट्रेड्स पीपल. तो मैंने देखा कि तुम कभी ट्रेड्स पीपल से डील नहीं करते हो. ओके स्टूडेंट्स, शैल वी कंटिन्यू? हाँ, आई एम आस्किंग यू. ओके, ट्रेड्स पीपल क्या होता है बताओ? तो वो कहते हैं बिजनेस पीपल. बिजनेसमैन या ट्रेडिंग में आप डील नहीं करते. यू डोंट पीपल हु डील विद ट्रेड. ओके, सो व्यापार. ओके, सो ट्रेडिंग, यू डोंट डील विद पीपल हु डील इन ट्रेड. तो आप ऐसा नहीं है कि किसी सामान. सो प्रोबेबली ही इज नॉट अ बिजनेसमैन. दिस आल्सो टेल्स अस दैट जेरेट इज नॉट अ बिजनेसमैन. व्हाट डज दिस टेल अस? ये आपके आरटीसी में आ सकता है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में. द ट्रेड्स पीपल, हु आर ट्रेड्स पीपल? जो आपके पास कुछ सामान लेकर आए और आप उनसे सामान लें, एक्सचेंज करें, राइट? सो यू डोंट डील इन दैट. तो इसका मतलब ये, और एक और चीज हम डिराइव कर सकते हैं दैट इंट्रूडर हैज बीन रीडिंग ऑन हिम क्वाइट अ लॉट. ही नोज क्वाइट अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट हिम. व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग दैट ही नो अबाउट हिम? That he knew about him, that was that he owns a car. The second thing is that he doesn't interact with any tradesman or people. Okay, you seem to have taken a considerable amount of trouble since you know so much about me. Won't you say something about yourself? आप तो मेरे बारे में काफी कुछ जानते हैं. अभी तक अपने बारे में तो आपने कुछ नहीं बताया. I could tell you plenty. मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ. You think you are smart, but I'm the top of the class round here. आपको क्या लगता है कि आप स्मार्ट हो? मैं यहाँ पे सबसे टॉप नॉच हूँ, सबसे ज्यादा स्मार्ट मैं हूँ. I have got brains and I use them. That's how I have got where I have. और वो he is quite boasting कि उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कर लिया है, बहुत कामयाबी हासिल कर ली है. And he's saying that कि मेरे पास दिमाग है, मैंने दिमाग यूज किया और उसी की वजह से मैं आज जहां पर हूं मैं वहां हूं. And where precisely have you got? और कहाँ पहुंच गए हैं आप, जरा ये भी बता दीजिए. It didn't require a great brain to break into my little cottage. और इन्होंने कहा कि ज्यादा दिमाग की जरूरत तो नहीं है मेरे कॉटेज में आने के लिए, तो इसके अलावा आपने और क्या किया है? तो he is also, you can see that he is never threatened at any point. He doesn't show his fear. आपके सामने कोई गन लेकर, रिवॉल्वर लेकर ऐसा बैठा है और आप इतना कैजुअल कॉन्वर्सेशन करोगे, उसके साथ ह्यूमरस टॉक करोगे, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है. इट्स वेरी डिफिकल्ट. बट जेरड इज अ वेरी स्मार्ट person and he knows how to tackle the conversation, how to tackle a situation and engage the other person in his conversation. So intruder, when you know why I have broken into your little cottage, you will be surprised and it won't be a pleasant surprise. तो वो कहते हैं कि जब तुम ये जानोगे कि मैं यहाँ क्यों आया है, broke into is to enter forcefully. Okay, why I have entered forcefully.
in your cottage, you will be surprised. तुम्हें surprise तो होगा, तुम्हें shock होगा, लेकिन वो pleasant surprise नहीं होगा. That will be more of a shock. With you figuring so largely in it, that is understandable. By the way, what particular line of crime do you embrace? Now look at this. वो उनसे ये नहीं पूछ रहे कि आप क्या क्राइम करते हो, कह रहे कि आप किस तरह के क्राइम में शामिल हैं, जरा बताइए. So the way he's asking him is very humorous. और aren't you a specialist? या आप हर तरह के क्राइम कर लेते हो, मतलब मर्डर भी कर लेते हो, चोरी भी कर लेते हो, लोगों का को धोखा भी दे देते हो, राइट? सो या आप कोई स्पेशलिस्ट है क्राइम में कि हाँ मैं सिर्फ मर्डरर हूँ, या आप किसी भी तरह का क्राइम कर लेते हैं, आप भेदभाव नहीं करते क्राइम में. इज दैट सो? सो इज बीइंग वेरी वेरी in a mocking manner or in a very sarcastic or very humorous manner, he's tackling the situation. My speciality is jewel robbery. तो इन्होंने अपने बताया कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरी स्पेशलिटी तो है, मैं ज्वेलरी चोरी करता हूँ ज्यादातर. योर कार विल डू मी अ ट्रीट, और तुम्हारी कार से मेरी काफी मदद हो जाएगी. It's certainly a dandy bus. So dandy bus refers to, what is dandy bus, students? Come on, tell me. Something which is, it's quite exquisite. उनको बहुत मजा आएगा उसके साथ. ओके, क्योंकि आपको जब आप रॉबरी में इन्वॉल्व हो तो आपको ऐसा चाहिए जो आपको जू 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 यहाँ से वहां बहुत फास्ट नेविगेट करने में हेल्प करे. एंड प्रोबेबली ही फाइंड्स दिस क्वाइट सूटेबल फॉर हिमसेल्फ. Afraid jewels are few and far between the wild of Essex. और इन्होंने क्या कहा कि ये जो एसेक्स जगह है जहां कौन रहते हैं, जेरार्ड रहते हैं, यहाँ पे ज्वेल्स तो बहुत कम है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, जूल क्या चोरी करेंगे आप? So are the cops. I can retire here nicely for a little while. तो उन्होंने कहा कि हाँ ज्वेलरी तो कम है यहाँ पे, चोरी करने का मौका कम मिलेगा. और कॉप्स रेफर्स टू पुलिसमैन. ठीक है, पुलिसमैन भी कम ही है. सो यहाँ पे मैं रिटायर, आई कैन रेस्ट. ओके, यहाँ पे मैं आराम से रेस्ट कर सकता हूँ. यू मीन टू लिव विथ मी? तो इसका मतलब आप मेरे साथ रहना चाहते हैं. A trifle sudden, isn't it? You have not been invited. ये बड़ी मजाहिया बात कह दी आपने, मैंने तो आपको इनवाइट भी नहीं किया. ऐसा आप कैसे कह सकते हो? You won't be here long, so I didn't trouble you to ask. तुम अब ज्यादा देर के मेहमान नहीं हो. What do you mean? This is your big surprise. यही तो सरप्राइज है. I'm going to kill you. A little harsh, isn't it? ये तो अजीब बात कह दी आपने, इतनी ऐसी बात आपने मुझे कह दी. बहुत सख्ती वाली बात आपने इतनी आसानी से कह दी मुझे. With heavy sarcasm, yeah, I'll be sorry to do it. I've taken a fancy to you, but it's just got to be done. हाँ सही बात है, लेकिन मैं करूंगा, मुझे तुम्हें किल करना है किसी भी हाल में. ओके, are you understanding this, student? This is such an interesting story. I hope you all are enjoying this. Yes, everyone. Yeah, and then we'll start Menti. Hi Aditi, hello. Okay, so why add murder to your other crimes? And he's saying that okay, you are a robber, why are you adding murder to your list? It's a grave step you are taking. मैं कह रहा हूं ये बहुत ही grave, बहुत ही serious step है जो आप ले रहे हैं. I'm not taking it for fun. मैं मजाक के लिए नहीं ले रहा. I have been hunted long enough and I am wanted for murder already. And they can't hang me twice. Now this is quite important. He says that he's a murderer already. Okay, so he said that I have committed murder already and काफी मेरे पीछे पुलिस पड़ी हुई है, वो मुझे ढूंढ रही है. तो ऐसा तो नहीं कि मुझे एक मर्डर करूं या 2 मर्डर करूं, दोनों के लिए तो एक ही बार हैंग करेंगे ना, 2 बार तो नहीं करेंगे. So it's okay, कोई फर्क नहीं पड़ता. You are planning a gratuitous double, so to speak. Admitted, you have nothing to lose. But what have you to gain? आपको इसका नुकसान तो क्या है, पर इससे क्या फायदा होगा आपका? Now of course we'll continue this part in the special class at 5:30 students. ठीक है, यहाँ से. और अभी के लिए we'll move to Menti. Are you all ready? So before we start Menti, I request you all, Aditi, Sandeep, are you there in the class? Everyone.
Shaubhagya, everyone, come on, come on, come on. Let's move to Menti. And I request you all to call in your friends एकदम fast ताकि हम जल्दी से Menti start कर सकें. Okay, share the session. I need more people. I want more students here in the class. चलिए start करते हैं Menti. But before that, I request you all to share the session with your friends. कुछ questions हम अभी करेंगे and then you all can get the link of the session that in which we'll continue the chapter and we'll have discussion on the important NCERT questions and some extra questions on this chapter after the session on special class. तो उसका link आपको Telegram पे मैंने share कर दिया है. ठीक है? Okay. The code is 31597994. That is the code. Let's move. Okay, it's visible, everyone. The code is visible or not? 31597994 is the code. Shreya, it's right in front of you. Minakshi, it's right in front of you. So students, did you all enjoy the story? It's very nice. The play is written in a very nice manner, very interesting. The character of Gerard is very important and very promising. It's right in front of you, students. Have a look here quickly. जल्दी से आ जाइए एकदम fast. Okay, great. Come on, come on, come on. The code is 31597994. Everyone, जो भी आपके ग्रुप्स हैं जल्दी से शेयर कर दो. I want 10 people here in the class to start it. Now before I proceed, for those who came in late, let me quickly do a brush up of the important words from the chapter. Intruder. Who is intruder? Someone who enters without permission. That is intruder. Criminal कौन है? Someone who has committed some sort of crime. Identity. What is identity? The characteristic of a person that determines who you are. Okay. And upstage का मतलब होता है basically the towards the back of the stage, that is upstage. Okay, lounge suit क्या है? Yeah, so lounge suit is a suit that you wear usually in lounge, which has a matching jacket and a trouser. So there's a jacket and then a trouser in it. Okay, especially during जब आप किसी काम पे जाते हो तो आप lounge suit पहनते हो. एंड कल्चर्ड ऑफ कोर्स यहाँ पे रिफाइंड टोन को रेफर किया गया है. टेस्ट, मैनर, गुड एजुकेशन, इन सब चीजों के लिए. ऑलराइट एवरीवन, मेलोड्रामेटिक समझ चुके हैं आप, जिसमें कि बहुत ज्यादा एग्जैजरेशन, ओवर इमोशनल बिहेवियर हो, वो है मेलोड्रामा. क्लियर? नाउ अ नॉन चैलेंज क्या है? व्हाट इज नॉन चैलेंज? नॉन चैलेंज एक्सप्रेशन, दैट इज एन एक्सप्रेशन दैट एक्सप्रेसेस अ लॉट ऑफ कामनेस, कंपोजर. ठीक? Not anxiety, not any kind of panic. So this person, Gerard, he was not panic at all by the sight of this intruder. He was rather relaxed. Clear, everyone? Okay. Chaliye. Let's get started. First question on your screen, all of you. आइए, जल्दी से आ जाइए. Minakshi, Shreya, Aditi. What is melodrama? I just explained this to you, everyone. So please answer this correctly. A suspicious act. Performing on stage, exaggerated or over emotional. What is melodrama? Melodrama हम किसे कहते हैं? Dimple, where were you, my dear? Come on, join Menti fast. Very good. It's not performing on stage. It's not a suspicious act. It is exaggerated or over emotional. That is melodrama. Melodrama कहते हैं ना, you are a melodramatic person. बहुत ही ओवर एक्टिंग करते हो, melodramatic हो, ठीक है? Okay, so I have Pragya who got it right, Shreya, Shubhadra, Devanshi, Jyotsna, Watson. आज बहुत सारे new students हैं और वासु हैं, हरलीन है, स्टेजल हैं. Students, if you enjoyed the class, don't forget to continue with me on, first of all, connect with me on Telegram and join the next session, which is on Unacademy platform, everyone. Okay. Question number 2 on your screen, everyone, fast. What was the intruder's plan? Intruder का ultimately plan क्या था? What was he planning to do? To kill Gerard,
elude the cops, and disguise as Gerard. To rob Gerard and take his property, to stay with Gerard forever, या फिर इन सब कुछ करना चाहते थे वो. Not yet, Dimple. I'll give you the homework after this. Very good. To kill him and कॉप से एल्यूट करना, उनसे इवेट करना, बचना और फिर जिराज की तरह पूरी अपनी जिंदगी गुजारना. That was his intent. Okay. All right. So Pragya, Shreya, Jyotsna, Anik, Shrejal, Harleen, Aditi, Vasu, you all gave it the correct answers. Brilliant. Next one on your screen. Third question. Past. Misclick ho gaya Reena, no problem. Who else lived in the cottage with Gerard? हमें क्या बताया जाता है? He lived with a servant. He lived with his friends. He lived alone. Very good. He lived alone. But then he somehow evades the question. He didn't answer the question that he was repetitively asking. The intruder was continuously asking him, but he didn't answer that. Pragya, Shreya, Jyotsna, Anik, Shrejal, Harleen, Aditi. So Aditi has taken the lead. Vasu, Devanshi, and Subhadra. No problem, dear. You can answer in the chat box. That's okay. What is the meaning of dodge? किसी situation को dodge करने का क्या मतलब है? To imbibe, to avoid, to kill. What is dodge? I'm dodging. You're just dodging. When I ask you difficult questions, you all just dodge, which means to avoid. It's not killing. No, 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 no. Okay, so dodge is to बचकर निकलना. You try to skip or escape from that situation. किसी सिचुएशन को अवॉइड करना. अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्या कहते हैं मैम? क्लासरूम में बोलते चलो हाथ उठाओ. जितने बच्चों को ये क्वेश्चन आता है, you raise your hands and you are like dodging. No, 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 I will not give the answer. So you're just dodging, trying to escape. All right? Okay, Pragya. So Pragya is leading right now. Shreya, Harleen, Vasu. Only 4 students got this right. Others, come on. Okay, question number 5 on your screen, everyone. Let's quickly have a look. What is nonchalant? I explained this word to you several times and it is quite important. So please answer this. Unexplainable, not interested, calm and relaxed. What is nonchalant? Oops, students, no. It's calm and I have explained this to you several times during the session. Please watch the session. Okay, please watch the session completely. Nonchalant मतलब बहुत ही calm, composed, आराम आराम से, not panic. Come on, so this means you didn't watch the session. Please watch it. Vasu, Shrejal, Devanshi. Very good. चल आगे बढ़ते हैं fast. Question number 6, last question. Yes, Dimple, correct. Was the story about Gerard committing murder true? Okay, so this we'll reveal, we'll get to know in the later part that he narrated a story in which he said that he had committed a murder and he will probably be hanged for it. So it's okay if the intruder takes his identity, he has got no problem with that. So in reality, he had not committed any murder. He was just trying to weave a story. So it was a fiction. Okay, it was a fictional story that he weaved. All right, everyone. So great. You all got it right. 6 people got this right, but 2 students got wrong. So let's see who all got this correct. Pragya. Okay, Pragya, Aditi, Vasu, Shrejal, Devanshi. Okay, great. Very good. Very good, Pragya. Very, very good. Well done. 4878 points के साथ आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया मेंटी में. अभी हम जल्दी से यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के और आंसर्स डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम कहाँ मिलने वाले हैं लर्नर्स? जल्दी जाकर इनरोल कर लीजिए फॉर द अपकमिंग क्लास. ठीक है, और वहां पे हम कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को. राइट, जहां पे हम देखते हैं कि कैसे इसके बाद इस पूरे कॉन्वर्सेशन के बाद
जेराड ने उसे अपने कॉन्वर्सेशन में ट्रैप किया इंट्रूडर को, तो अल्टीमेटली प्रूव क्या होता है, हु इज स्मार्टर, इंट्रूडर या जेराड, हु इज स्मार्टर अमंग टू? टेल मी स्टूडेंट्स, हु इज स्मार्टर अमंग द टू? ऑफ कोर्स जेराड। ओके, होमवर्क क्वेश्चन है आपका, गिव 5 क्वालिटीज ऑफ जेराड, एंड ये रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी बच्चों से, ऑल ऑफ यू, एंड लेट्स कॉन्ग्रेचुलेट द विनर फर्स्ट। प्रज्ञा को जल्दी से कॉन्ग्रेचुलेट कर दो। Azam, hello, I'm seeing you after a long time. Where were you, my dear? So not today, I'll have a session with you all tomorrow, class 10th के लिए, ठीक है? और जो सेशंस हुए हैं आप उन्हें देख सकते हैं टेम्परेरली। और ऑफ कोर्स अभी आज थर्सडे इज द डे फॉर क्लास 9th, है ना, क्लास 9th के बच्चों के लिए। हाउ टू इनरोल आदिति? आदिति आप टेलीग्राम ग्रुप पे जाएंगे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप जा करके इनरोल कर सकते हैं अभी अपकमिंग सेशन के लिए अनअकैडमी के ऐप पे। उसके लिए अनअकैडमी का ऐप आपके फोन में होना चाहिए, तभी आप सेशन अटेंड कर पाएंगे। और इस क्वेश्चन के आंसर को आप क्लिक करके डाउट सेक्शन में भेज सकते हैं। इफ यू हैव रिटन the 5 qualities of Gerard, you can send this to me at 5:30 session. If not, you can reply this to me in the comment section of this particular video. ठीक है, जैसा भी आपको ठीक लगे, आप दोनों रास्ते हैं। अब 5 qualities of Gerard बताएंगे। ह्यूमर में बता चुकी हूँ, नॉन चैलेंट पर्सन बता चुकी हूँ, तो इनमें से you can find a few more for yourself and then answer the question. Okay जी। और कुछ बैचेस है क्लास 9th के लिए, आप एनरोल कर सकते हो। क्लास 10th के लिए ऑनगोइंग सेशंस चल रही हैं अभी, अचीवर्स बैच, लक्ष्य बैच एंड प्रोडिजी बैच, एंड देन यू आल्सो हैव प्रोडिजी एग्जाम दैट टेक्स प्लेस on 23rd को हो चुका है, 29th 6 February and 13th February, so don't miss the chance. This is going to happen at 12 noon. So this is quite exciting. This gives all the learners an opportunity to win a scholarship, prizes, and this tests your mental ability and logical reasoning. Okay, this is the timing for you. Take a look at the syllabus, students. It's mental aptitude, verbal ability, general science, and logical reasoning. That's it. And then this is for class 7th, 8th, 9th, 10th learners. You can spread the word. You can call your friends, call your siblings, your cousins, and help them get rewards for it, which are very, very exciting. So exciting rewards include rank 1 will get MacBook Air, rank 2 and 3 will get Apple iPhone, rank 4 and 5 will get Apple iPad, rank 6 to 40 will get Amazon Echo Dot, rank 41 to 100 will get Amazon vouchers, and scholarship slab भी है आप लोगों के लिए, ये आप देख सकते हो। 100% से लेके 15% तक का स्लैब है रैंक 1 से 500 के स्टूडेंट्स के लिए। और प्लस और आइकॉनिक के बच्चों के लिए 31 जनवरी तक जो प्लान है वो है, अभी आपको 3 मंथ्स का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिलता है प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ। लेकिन अगर आप हमारा रिपब्लिक डे ऑफर अवेल करके आज ही सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 3 के बदले 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, और ये ऑफर सिर्फ आज तक वैलिड है, कल से ये ऑफर एप्लीकेबल होगा। एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 12 मंथ्स एंड अबव अगर आप लेते हैं, सो यू गेट अ 6 months Creative Corner subscription absolutely free with that. Thank you, students. I hope you all had a good time. I definitely enjoyed a lot with you all. And please don't forget to like and share the session with your friends. Okay. Okay, no problem. Of course, we'll start, Aditi. Don't worry, after completing the chapter that we're already doing. Okay. And thank you so much. Share the session with all 9th class learners. All right. Bye-bye. Take care.